Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. Chapter number 1 Introduction to Statistics was continued. Today lecture number 6 and topic significant digits and scientific notations. तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा these two topics. तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें. So let's start the topic significant digits and scientific notations. In the contents of this lecture, students, I will discuss first point significant digits. In the second point, I will discuss rules for the zeros to be significant, and the last point is scientific notations. In the first point, I will discuss the brief introduction about the significant digits. In the significant digits, the accurate digits in a number other than zeros needed to locate the decimal point are called significant digits of a number. Thus, zeros in a number needed to locate the decimal point are not significant. For example, when we say that distance between Lahore and Rawalpindi is 300 km, it means that only the first digit is accurate because the actual distance between Lahore and Rawalpindi is 316 km. The two zeros in 300 are not the actual measurement. They have been put only to locate the positions of a decimal point. Here the number 300 has only one significant digits. तो 300 में आपके पास जो दो zeros हैं which is not significant digits, only 3 is a significant digits, only one number is significant in 300 number. तो स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी जो zeros हैं यहाँ पे जो locate कर रहे हैं to locate the decimal point are not significant digits. Now students, I will discuss the rules for the zeros to be significant. There are the three basic rules for the zeros to be significant. In the first rule, zeros are significant when they follow a decimal point. In the number 17.00, the zeros are significant and it have four significant digits. तो point के बाद जो 00 है students यहाँ पे 17.00, it means that here zeros are important and zeros are significant. In the second rule, zeros occurring within significant figures are always significant. In the number 405, the zero is significant and it have three significant digits in the number 405. अगर zeros आपके किसी भी number के अंदर जो है वो lie कर रहा है तो it means that zero is important and zero is significant. In the third rule, zeros are not significant when they follow a decimal point but are at extreme left of the number. In the number 0.0012, here the zeros are not significant and it have only two significant digits. तो कोई भी zeros जो हैं वो आपके पास locate करें decimal point को but it lie at the left of the number, so zeros are not significant. In the number 0.0012, they here zeros are not significant and only two numbers 1 and 2 are significant digits. Now students, I will discuss another topic, that is scientific notations. To write a number in a scientific notation, we write the first digit followed by a decimal point and then write such other digits as are significant and finally multiply the number by whatever power of 10. It may be necessary to put the decimal points in its proper place. In scientific notations, we write the number in the power of 10. For example, the number 40. The number 40 we can write in scientific notations as 4 multiplied by 10, which is also 40, or 10, or 4 multiplied by 10 की 10 power 1. It is called scientific notation. The number 400 we can write 4 multiplied by 100, and we can write 100 as 10 power 2. So this is called scientific notation. The number 4000, 4 multiplied by thousands, and we can write 1000 as 10 की power 3. तो इसको हम 10 की power 3 में write कर सकते हैं. तो 4 multiplied by 10 की power 3. This is the scientific notations of the number 4000. And the number 3410 we can write in scientific notations as 3.41. इसके many other significant digits को हम लोग write करेंगे 3.41 and multiply by thousands, और 1000 को write किया जा सकता है 10 की power 3. तो it means that के 3.41 multiply by 10 की power 3
is a scientific notation of the number 3410. So this is the way of calculating, of writing the number in scientific notations. Now in this table, I have discussed some other numbers and write in scientific notations and also write the significant digits. So first of all, I have the number 1535, 1535 और इसको हम लोग write कर सकते हैं scientific notations में 1 के बाद point use करेंगे 1.535 और 535 means कि आपके पास 3 significant digits हैं point के बाद 1.535 and write 10 की power 3 multiplied by 10 की power 3. This is the scientific notations of the number 15,035. And we have the 4 significant digits in this number. In the second example, 127, we can write as 1.27 और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे 10 की पावर 2 क्योंकि पॉइंट के बाद आपके पास दो नंबर्स हैं, हमने पॉइंट को प्लेस किया है आफ्टर टू डेसिमल प्लेसेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और इसमें हमारे पास जो नंबर्स हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स विच इज थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इन 127 130. This is the third example. 130 we can write as in scientific notations 1.3 and और आपने राइट किया है पॉइंट जो है वो आपने राइट किया है फर्स्ट डेसिमल प्लेस के बाद, तो आपके पास 10 की पावर 2 होगा 10 की पावर 2 और इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके पास टू नंबर्स हैं. zeros are not significant, only locate the decimal point. तो 2 आपके पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे इन 130 में. And 31 is the fourth number and 3.1 और इसमें हमने पॉइंट जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक फर्स्ट नंबर के बाद उसको राइट किया है, तो 10 की पावर 1 को यूज करेंगे इन साइंटिफिक नोटेशंस में और वी हैव टू significant digits in 31 number 31. Next number is 4.70 and 4.70 have थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स और इसमें हमारे पास जो राइट किया जाएगा 4.7 और साइंटिफिक नोटेशंस में और 10 की पावर 0 ऑलरेडी आपके पास पॉइंट यूज किया जा चुका है, तो यहाँ पे आपके पास 10 की पावर 0 रहेगा. और इन द नेक्स्ट नंबर 0.247 और 0.247 तो पॉइंट को शिफ्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 2.47 और जब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो आपने 10 की पावर -1 यूज करेंगे और हमने डेसिमल पॉइंट को जो है एक नंबर शिफ्ट किया और वी हैव अ 3 significant digits in this number एंड देन 0.035 और इसमें हम लोग जो है पॉइंट को शिफ्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आफ्टर 3 और देयर आर द टू डेसिमल पोजीशंस, तो 3.5 राइट करेंगे और इसमें 10 की पावर -2 को यूज करेंगे क्योंकि हम लोगों ने दो नंबर्स जो है वो जंप लिया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और वी हैव टू significant digits क्योंकि zeros जो है वो are at extreme of the left extreme of the number, so zeros are not significant, so we have two significant digits. And the last number 0.0072 in scientific notations we have 7.2 and zeros are point is used from 7, so 7.2 और 10 की पावर 3 -3 यूज करेंगे क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है हमने थ्री आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस पे पॉइंट यूज किया है, तो ये 10 की पावर -3 एंड वी हैव टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स बिकॉज ऑफ द zeros are lie at the left of the number. So these are the examples of the numbers which we write in scientific notations and write the significant digits. In this lecture, students, I have been discussed two topics, significant digits and scientific notations, and discuss the rules for the zeros to be significant, and then write the numbers in scientific notations. तो इंशाल्लाह students अगले lecture में आपसे मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू.